She has four children. Yes, that's right. She has four children. Okay, so and okay, does she like you? Or does she like, yeah, I mean, your sisters or your brothers more, or she likes you more? Sir, I am elder, so she obviously like me. Okay, she likes you. Okay, that's really good. So Fawzia is here. Fawzia is going to Assalamu alaikum, Fawzia. How are you today? So Fawzia is not here anymore. I'm gonna talk to Safina. Safina, please unmute your microphone. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam, Safina. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. What about you, sir? I'm good. Alhamdulillah, I'm fine. So Safina, how was your weekend? Yeah, it was really hectic. I had lots of work Really? because I mean, whenever you come on Monday, you tell me the same thing. It was a hectic day yes, for you. yes, sir, it was because as you know, I am living in joint family, so we have lots of work to do. As just I told you, I have lots of laundry, so I was busy in laundry Mm-hmm. full day on Saturday. So after that, Uh-huh. I, after getting so much tired, so I fevered a lot. I had Mm-hmm. so I was very tired. So yes, yesterday Okay. also I have lots of work. I went out for buying something for my daughters. So Okay. yes, I spend my day like this these 2 days. And after Okay. Maghrib, I don't know where I am. I was just tired and I was lying on my bed. That's it. I don't want to do anything, and I was not in that condition to do something more. Do you know that you're constantly using the present simple tense to talk about Saturday and Sunday? Do you Uh, know that? You're constantly using the present simple tense. You're using the present simple tense to talk about okay, past actions. I mean, things that you did on Saturday and Sunday, and you're using okay, the present simple tense, which is not right, right? Okay. okay, okay. Inshallah. Okay. So I'm gonna talk to Noor. Noor, please unmute your Yes, sir. microphone. Okay, Noor. So you're gonna tell me about your weekend. How was your week? Jimmy? Okay, Noor is not here. Maybe she's busy. Fawzia, unmute your microphone. Yes, Fawzia. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Fawzia. How are you today? I am fine, sir. Actually, there is some And network problem, mhm, sir, so that's why I am late. okay, no problem, no problem. So, how was your weekend? What did you do? Sir, nothing special. It was as usual as other weekends because my Mm-hmm. children are grown-ups, so we didn't go anywhere on the weekends. My husband is also a very busy person. He remained busy on Sundays sometimes. So he was busy yesterday and on Saturday also. So Mm-hmm. we remained at home on our weekend. So nothing So special. you didn't go anywhere. Didn't go anywhere. So your husband is a busy person. So what does he like? He works on Sundays and Saturdays as well. What kind of work does he do? He's a builder or something? Maybe. No, sir. There were a lot of meetings that were going on and on and on all the day. So he Okay. was very in his meetings. Sometimes he visit the field where the tobacco grow. So he visited the fields and met the farmers. So that's why he is So what always what kind busy. of what kind of what kind of job does he have? Like what does he usually do? I mean, what does he do? Sir, he is the depot in charge in Okada here. He is the head of the Okay. depot. So he has Uh-huh. all the responsibilities of the depot to meet the farmers, to check their things like growing tobacco and other things. And the quality as well. Does he like is he responsible for the quality check too? Yes, sir. Yes, he is responsible. He is responsible So for when the he's whole thing hmm in this area.
of Okada. Uh-huh. Okay. So he goes to different fields as well, and then he talks to the farmers working there, and Yes. he asks them to do what? He supervised them as they grow perfect tobacco or not, the tobacco is growing well or not. If there is some problem for example, like no, I don't know about tobacco, but he always check the fields and advise the farmers about what to do and how to do. Checks. Check, Checks and yes, advices. Checks yes, and sir. advices. Yes, Okay. sir. Okay. Okay. So and what about your visiting the website, visiting the lounge, your conversation with Safina and Fauzia? Yes, sir. No, I no, no. So visited Safina yesterday. and Farah. Okay. Yes, sir. I visited Uh-huh. yesterday at 7 p.m., but there was no person in the lounge, neither my class fellows nor any other persons. So I waited for Uh-huh. some time. I leave the lounge. There was Okay. nobody. So and what about Farah? You said that you would visit at 9 in the morning, but what happened to that No, planning of sir. yours? I couldn't visit at 9 because I was much busy on Saturday and Sunday because my children are at home and my daughter was not feeling well. She has cough, cold, Mm-hmm. and fever, so I remain busy with her. So So I she is couldn't still visit is at or 9. she had? She is She still had she is still no, sick? She had. no, sir. She Okay. is much better now. Now Uh-huh. she gone to school now, so I am free. Okay. Okay, that's good. That's good. Okay, so I'll come back to you. And Noor Okay. is going to unmute her microphone and tell me if yeah. Yeah, sir. Sir, I am eating breakfast to my mother, and there is a issue to talking, Okay, and no problem, Noor. because Yeah. she Okay, doesn't we want to her anyone any other person or kid. She just want me to near her, so that's why there is some issue to me for taking class. okay. No problem. No problem. Okay. So you Thank want you, sir. to mute your microphone for now. No problem. Okay. So I muted your microphone. Okay, guys. So today we have learned a lot of things so far. I mean, not many. I think we've done 5 units, right? And today we are going to start the 6th unit, right? And for those of you who are watching us on Facebook or YouTube, I want to just tell you that, I mean, right now it's just not possible to take admission because they're closed now. But you can see how what happens and how we teach in our online classes. So just stay here, and today you can learn something, and that is today we'll be teaching how to use there plus be, and how to talk about someone's existence, how to show, how to tell that something is present somewhere. Okay, so this is what we'll be doing today, and to do that, I'm gonna share my screen, and just give me a second. So I want everybody to confirm if you see my screen. Yes. Yes, sir, I can see. Yes, sir. Okay. Yes, Okay, sir. that's okay. Thank you very much. Okay, so I'm gonna mute your microphones, right? I'm gonna mute your microphones, and then I let you unmute your microphones. When I'm done with my presentation and during my presentation as well. So this is the topic today. Today, I'm gonna teach you how to use there plus be, the verb to be. Be means the verb to be. Whenever we say be, it means that the verb to be. So you know what the verb to be is. I've already taught you about the verb to be, which is mr. The verb to be in the present time is mr. जो be है, जो verb to be है, वो is mr present time में होता है. और there प्लस बी जो आज हम कर रहे हैं, ये आज का जो मौजू है हमारा, वो ये वो वाला देयर नहीं है. यानी हियर देयर एडवर्ब जो होता है, हियर या देयर होता है ना, ओवर देयर, वहां पर आई मीन जो एडवर्ब होता है, ये वो चीज नहीं है. ठीक है. कुछ जुमले ऐसे होते हैं इंग्लिश के अंदर जो कि हम देयर से शुरू करते हैं. ठीक है. और वो किस लिए शुरू करते हैं, ये अमूमी है इंग्लिश में, आमतौर पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं रोजमर्रा हमारी कन्वर्सेशन के अंदर, हम इस तरह के जुमले बोलते हैं क्योंकि हम ये बता रहे होते हैं कि कोई चीज किसी जगह पे मौजूद है. सो दिस इज द टॉपिक टुडे.
Today, we are learning how to use there plus be to show that something or someone exists somewhere. So when you want to show that something is present somewhere at a particular location, तो आप ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज या कोई शख्स किसी खास जगह पर मौजूद है, कोई शख्स या कोई चीज किसी खास जगह पर मौजूद है, ठीक है, उसकी पोजीशन बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज मौजूद है किसी जगह पे, तो हम इंग्लिश में there प्लस बी, ये एक खास स्ट्रक्चर है जो तरीकाकार है, हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में किसी की जगह बताने के लिए कि कोई चीज किसी जगह पर मौजूद है, या someone is present somewhere, to show that we use there plus be. For example, now you see, what do you see there? There you see a cup, and it's on a table, right? So there is a cup on the table. So we don't say a cup is on the table. That is possible, but this is not how we say it in English. A cup is on the table. We don't say it like that. We say there is a cup on the table. So there does not mean anything. Let me tell you. ये जो there है ना, ये एक डमी सब्जेक्ट है, ठीक है, एक बस ये जुमला शुरू करने का तरीका है, फिलर समझ लें इसको, बस ये खाली जगह पुर करने के लिए, जुमला शुरू करने के लिए है, ठीक है। इसकी मैं इसमें ज्यादा गहराई में इसमें इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि एक लेवल जो है वो बिगिनर है, सही है। तो हम थोड़ा इंशाल्लाह कल मैं थोड़ा इसके बारे में और मैं आपको कुछ बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, ठीक है। आज चूंकि आज इसको हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देखेंगे, इसको बहुत ज्यादा गहराई में इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। सो देयर इज अ कप ऑन द टेबल। सो आपको देखें एक कप नजर आ रहा है, वो टेबल के ऊपर रखा है, आप बताना चाह रहे हैं किसी को भाई टेबल के ऊपर जो है एक कप, बता करेंगे देयर इज अ कप ऑन द टेबल, देयर इज अ कप ऑन द टेबल, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे अ कप इज ऑन द टेबल, आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे देयर इज a cup on the table. अब ये जो there है doesn't have any meanings, no meanings at all. इसके कोई मायने नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इसको फिलर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जुमला शुरू करने का एक तरीका है, ठीक है, जो नेटिव स्पीकर्स ये खास स्ट्रक्चर यूज करते हैं किसी भी चीज की, यानी कोई भी चीज हो या कोई शख्स हो, उसकी जगह बताने के लिए, उसकी लोकेशन बताने के लिए, सही है। इसी तरीके से देखें, अब ये एक दरिया है, ठीक है, और इसके अंदर दो हाथी हैं। अब आप देख सकते हैं दरिया में दो हाथी हैं, सही है। तो हम कहेंगे there are, अब हम there are यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम जो अब सब्जेक्ट ला रहे हैं, सब्जेक्ट इसमें क्या है? टू एलिफेंट्स। बात किसकी हो रही है? टू एलिफेंट्स। बात हम टू एलिफेंट्स की कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इस तरह नहीं बोलते इंग्लिश में टू एलिफेंट्स आर इन द रिवर, नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि किसी खास जगह पे कौन मौजूद है। तो ये बताने के लिए कि भाई जैसे कि दरिया के अंदर दो हाथी मौजूद हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे देयर आर टू एलिफेंट्स इन द रिवर, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि भाई रिवर में जो कि खास जगह है वहां पे जो है वो दो हाथी क्या है? मौजूद है। तो आप ये नहीं कहेंगे टू एलिफेंट्स आर इन द रिवर, आप कहेंगे देयर आर टू एलिफेंट्स इन द रिवर। इस तरीके से हम बयान करते हैं इंग्लिश के अंदर, इस तरह बोलेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ अजीब सा लगे, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आमतौर पे उर्दू से इंग्लिश करने की आदत है, तो वो उर्दू में सोचते हैं, तो पहले उनके जहन में आता है कि जी दो हाथी या दरिया के अंदर, तो वो इस तरीके से इंग्लिश है, उर्दू से इंग्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो गलती करते हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट, देयर आर टू एलिफेंट्स इन द, अब टू एलिफेंट्स है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नहीं है, हम किसी एक चीज की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे देयर आर, ठीक है। क्या यूज करेंगे? देयर आर। अभी देखें, इससे पहले हमने जो इससे पहली स्लाइड में जाते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक चीज की बात कर रहा था, अ कप, सब्जेक्ट क्या है? अ कप। सो मैंने कहा कि देयर जो है वो डमी सब्जेक्ट है, ठीक है, इट्स जस्ट अ फिलर, ठीक है, जुमले को बस शुरू करने का एक तरीका है, इसके कोई मायने नहीं है, यहाँ पे इसका कोई ऐसा कोई खास काम नहीं है, बस ये जुमले को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सही है। सो देयर इज अ कप ऑन द टेबल, चूंकि एक कप है, सब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, तो हम इज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब प्लूरल हो जाएगा तो हम वहां पे दो इस्तेमाल करेंगे, देयर आर टू एलिफेंट्स इन द रिवर। सो बिफोर आई मूव ऑन, आई वांट यू टू अनम्यूट योर माइक्रोफोन्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अगर इससे पहले आगे बढ़े हम, अगर कुछ सवालात हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, कि ये बात थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है? फौजिया, सफीना, Misbah, Yes, sir, Noor. clear. Understood, sir. Yes. Okay, Misbah, what about you? Is that clear? It's clear. Okay, so I'm going to mute your microphones. Okay, guys, go back to the presentation. Likewise, there is a cat in the garden. There is a cat in the garden. अब आपके ज़हन में आ सकता है कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई a cat is in the garden, कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कहते नहीं हैं, ठीक है। हम बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज किसी जगह मौजूद है, जैसे एक बिल्ली है, वो गार्डन में मौजूद है, बाग में, तो आप कहेंगे there is a cat in the garden, इस तरीके से आप बोलेंगे,
ये नहीं कहेंगे a cat is in the garden. मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन ये इस तरीके से नेटिव स्पीकर्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। जब कभी भी, चूंकि आपका मकसद क्या है, बताना चाह रहे हैं कोई चीज किसी जगह मौजूद है, आपका मकसद क्या है इस बात को बताने से? आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बिल्ली जो है वो किसी जगह मौजूद है, एक कोई चीज है, कोई जानवर है किसी जगह मौजूद है, तो जुमला किस तरह शुरू करेंगे? देयर इज या देयर आर से, ये है तरीका। तो अब आप बताना चाह रहे हैं भाई जैसे कि एक बिल्ली गार्डन में मौजूद, आप कहेंगे देयर इज अ कैट इन द गार्डन, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। Another example. Now, you can see it's a ground, right? And you can see many boys. So you say, somebody asks you, or you're telling somebody who is present in the ground. So you say, there are many boys in the ground. There are. So you don't need to use the word present. Present लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि there are का मतलब ही यही कि वो मौजूद है वहां पे, ठीक है। There are many boys in the ground. There are many boys in the ground. So you can see that there are many, right? So हमने there are क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि boys जो हैं वो ज्यादा हैं, plural है, तो हम कहेंगे there are many boys in the ground. So there plus be is used with common nouns. So common nouns आपको मालूम है, कोई खास noun होते हैं, एक तो proper होते हैं, कुछ common होते हैं, ठीक है। So हम there plus be को common nouns के साथ यूज करेंगे. For example, there is a girl sitting behind you. There is a girl sitting behind you. Or there are many eagles in the sky. There are many eagles in the sky. Right? So you're not going to say like this, there is a Tom sitting behind you. You're not going to say like that. Okay? So there is a girl sitting behind you. There are many eagles in the sky. So there plus be is used with common nouns. Keep that in mind. Okay? Common nouns के साथ यूज करते हैं। आप बताना चाहते हैं कोई चीज है, कोई जानवर है, कोई शख्स है, ठीक है। जैसे कि there is a postman at the door, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। So there is used with singular nouns. जो there is है, ये किसके साथ यूज करते हैं हम? singular nouns के साथ यूज करते हैं, ठीक है। For example, there is a car in the garage. There is a car in the garage. So garage है जनाब, उसके अंदर जो है वो एक गाड़ी, आप बताना चाहते हैं भाई garage के अंदर एक गाड़ी मौजूद है, तो आप बोलेंगे there is a car in the garage. So pronunciation क्या है? आप देखें इसकी pronunciation क्या है? Garage. ये sound है, garage. ठीक है, garage. So there is a car in the garage. ये जो है American pronunciation, keep that in mind. So there is a car in the garage. There is a painting on the wall. There is a painting on the wall. You can see there's a painting on the wall, right? Now, if you are talking about more than one thing, right? So if it's a plural noun, अगर plural noun है, एक से ज्यादा है, तो आप there are का इस्तेमाल करें, okay? For example, there are 2 pigeons in the sky. भाई आपको, आप आसमान में देख रहे हैं, 2 जो है वो कबूतर हैं, तो आप बोलेंगे there are 2 pigeons in the sky. There are 2 pigeons in the sky. There are many fruits in the basket. आप देख रहे हैं मुख्तलिफ इक़साम के फल मौजूद, आप कहेंगे there are many fruits. और कहाँ पर है वो? जगह क्या है? Particular location क्या है? In the basket. In the basket. So there are many fruits in the basket. Okay, before we move on, I want you to unmute your microphones if you have any questions. Yes. Fawzia, Misbah, Noor, Safina. Farah is absent today. That's strange. Clear, sir. No, Yeah. no, sir. Sir, eagle is not a proper noun. No, it's a common noun. Eagle is a common noun. Every eagle in the world is known as an eagle. Do you know which eagle we're talking about? Safina? Okay, sir. Yeah. Sir, I thought we Eagle, are girl, boy, are- pigeon, lion. okay. All birds, sir. Okay, sir. Fine. Yeah, these are common nouns. Yeah, it's a common noun. Okay. So, Fazia, any questions here? No No, questions? sir, it's clear. Okay, that's good. Okay, so I'm gonna mute your microphones. Going back to the presentation. दोबारा presentation की तरफ जा रहा हूँ. अच्छा जी. तो इस ध्यान में रखें कि ये जो अभी हम कर रहे हैं, जो टॉपिक कर रहे हैं, अमूमी इस्तेमाल का टॉपिक है, रोजाना आप इसको तकरीबन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
और लोगों को हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, जिसमें हम बता रहे होते हैं कोई चीज कहाँ मौजूद है, ठीक है ना। सो उसके लिए हम जो है देयर इज या देयर आर का इस्तेमाल अमूमी तौर पे करते हैं, और अगर आप फोकस करेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे, तो आप देख लेंगे, इसमें आपको पता चलेगा, मालूम होगा कि ये हम कितना ज्यादा इस्तेमाल इसको करते हैं, ठीक है। कंट्रैक्शन आपको मालूम है, किसी चीज को मुख्तसर करना, ज्वाइन करना, मुख्तसर करना, मिला देना। तो कंट्रैक्शन देख लेते हैं हम। कंट्रैक्शन क्या है? देयर इज की कंट्रैक्शन है देयर्स, theirs, बस theirs, there is नहीं होगा, जब आपने contract कर दिया तो बोलेंगे theirs, और there are की there is no contraction, no contraction for there are, इसकी contraction नहीं है, ठीक है। there is की contraction है और there are की contraction नहीं है। नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल देयर इज, आप नेगेटिव, आपको मालूम है द वर्ड इन इंग्लिश दैट वी यूजुअली यूज टू मेक a sentence negative, that is the word not. It's an adverb, right? So there is not a horse, or there's not a horse in the field. आप देखें field, देखें ये खाली पड़ी है ना, कोई घोड़ा नजर आ रहा है किसी को? नहीं नजर आ रहा होगा, तो कहेंगे there is not a horse in the field. आप इसको मिला के आमतौर पे हम कंट्रैक्शन यूज करते हैं, ध्यान में रखें कि नॉट जब यूज किया जाएगा तो उसको कोशिश किया करें कि कंट्रैक्शन में ही यूज करें। there isn't a horse in the field, so this sounds better than this is there is not a horse in the field. इससे ज्यादा बेहतर क्या सुनने में लगता है? there isn't a horse, there isn't a horse in the field. So this sounds better than saying there is not a horse in the field. So the contraction, I mean, this is a better option. You should be using the contracted form. So there isn't a horse in the field. Now look at the picture. There aren't 4 children in this picture. There aren't, or there are not, I'm not, okay, this is not the contraction. There are not 4 children, but it sounds really like, it doesn't sound okay. I mean, it is right. There's nothing wrong with it, but you should be using the contraction of are with not. So contraction use करें वो ज़्यादा बेहतर है. So there aren't 4 children in this picture. Instead of saying there are not 4 children in this picture, so you should say there aren't 4 children in this picture. There aren't, isn't. Okay. So before we move on, if you have any questions, yes, Fawzia, Misbah, Noor, Safina. No, sir. Clear, sir. Any questions? No, Yes. sir. Is that clear? Should be using the contracted form. Okay, contraction Yes, use sir. करनी है, ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव फॉर्म में जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको is not, isn't यूज करेंगे, और are not की contraction aren't यूज करेंगे. Okay. Okay, sir. Muting your microphones. Going back to the presentation. अच्छा जी, सो जैसे मैंने आपको बताया कि there is जो हम यूज करते हैं वो सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज करते हैं, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि उनको आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया, ऐसे लिक्विड जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो जब आप अनकाउंटेबल नाउन्स यूज करेंगे तो आपने there is का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे there's some milk in the bottle, there's some milk in the bottle, तो आप देख सकते हैं there's मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, there is का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दूध को आप गिन नहीं सकते, 1 2 3 करके गिन सकते हैं, इसमें हाथ डालें और फिर 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध कर सकते हैं। बिस्किट्स गिन सकते हैं, देखें कुकीज गिन सकते हैं, सामने आपकी कुकीज है, 1 2 करके इनको गिन सकते हैं, लेकिन दूध जो है वो नहीं गिन सकते। Bottles of milk may be counted, I mean can be counted, but milk itself can't be counted. दूध अपने आप में नहीं गिना जा सकता है, इसलिए अनकाउंटेबल है। तो हम उसके लिए there are यूज नहीं करेंगे, आप बोलेंगे there's some milk in the bottle. Likewise, there's some lemon juice in the jar. You see, it's a jar, right? And there's some lemon juice in it. There's some lemon juice in the jar. Juice जो है उसको भी आप गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं, इसमें हाथ डालें, इसको खोलें ढक्कन को ऊपर, लिड को, और गिने 1 जूस, 2 जूस, 3 जूस, इस तरह कोई नहीं गिनता ना, तो काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल क्या चीज होती है जिसको 1 2 3 करके गिन सकते हैं आप, वो काउंटेबल कहलाता है। लेकिन जूस, आप इसकी bottles ऑफ जूस गिन सकते हैं, कप्स ऑफ जूस गिन सकते हैं, टीस्पून्स ऑफ जूस गिन सकते हैं, यानी आप गिन क्या रहे हैं, टीस्पून, कप्स, bottles, jars, glasses, लेकिन आप itself, the juice itself can't be counted, उसको आप गिन नहीं सकते जूस को, ठीक है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन आप बता रहे हैं कहीं मौजूद है, जैसे जूस कहाँ है, जार के अंदर है, तो there's some lemon juice in the jar. Zero existence. अच्छा, बाजों का ऐसा होता है, कोई हमसे पूछता है भाई फलानी जगह पे कोई चीज मौजूद है, हम कहते हैं भाई नहीं है, यानी किसी जगह पे कोई चीज मौजूद नहीं होती,
ठीक है, कोई चीज मौजूद नहीं है, ना कोई बंदा होता है ना कोई चीज होती है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम मिसाल के तौर पे किसी ने आपसे कहा जाओ जरा कमरे में जाके देखो कोई मौजूद है, आप कहते हैं भाई नहीं वहां पे कोई मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आज देखें, अच्छा जाओ जरा भाई क्लास में जाओ, वहां पे कौन मौजूद है, भाई कोई मौजूद नहीं है। अच्छा जी, तो ग्राउंड में जाओ, ग्राउंड ग्राउंड के अंदर कोई मौजूद है, कहते हैं नहीं ग्राउंड में कोई मौजूद नहीं है। तो कहने का मतलब ये, जब ऐसा भी होता है वहां आप आपकी जवाब में ऐसी भी एक तरह की सिचुएशन होती है कि देयर इज नोबडी, जीरो एग्जिस्टेंस, तो कैसे बताएंगे जीरो एग्जिस्टेंस, कैसे बताएंगे? देखें, लुक एट द क्लासरूम, दिस इज अ क्लासरूम, राइट? डू यू सी एनी स्टूडेंट्स? नो स्टूडेंट्स, राइट? एम्प्टी. So we're going to say there aren't any students in the classroom. So if it's a negative sentence and there's nobody, कोई in zero existence आप show करना चाह रहे हैं, तो आप क्या क्या यूज करेंगे? Any negative response के अंदर अपने any का इस्तेमाल करेंगे. There aren't any students in the classroom. There aren't any students in the classroom. Okay, is that clear? Before I move on, I want you to ask me any questions you might have. Fazia, Misbah, Noor, No, Sir, sir. can we use Safina. there isn't any student, any के साथ can we use is, isn't? Yeah, you can use any. Any is usually used with plural nouns. In some cases, we can use with uncountable nouns, but it's better said there isn't a student or there is no student. Any is you should be using with plural countable nouns instead of a singular countable. You should say there isn't a student in the classroom or there is no student in the classroom. So if it's a plural noun, you should say there aren't any students. So any is preferred. You should prefer to use it with plural nouns, plural countable nouns. Okay. Okay, sir. Okay, instead of a singular noun. Don't use, I recommend not using it with a singular noun. You should be using it with plural nouns. Okay, Fazia? Okay, sir. Instead, you can say there isn't a student or there is no student. You can say that. That is Okay. possible. Okay. Okay, sir. So anyone else? Nobody? Okay, so I'm gonna mute your microphones. So let's move on. Question, how to make a question. Now you wanna ask a question. So it's pretty simple. Just place, invert there is. Is goes before there. So there is, if for example, there is a gorilla in the zoo. So if you want to make a question, so just place the verb is before there. Invert it, right? Invert. So now it becomes is there. There is becomes is there. Now that's how you ask questions. Is there a gorilla in the zoo? So the pronunciation is gorilla. You see? Gorilla. It's not gorilla. People say gorilla. No, it's not gorilla. It's gorilla. So is there a gorilla in the zoo? Gorilla, right? Gorilla. Pronunciation, you can see the phonetic symbols there. So is there a gorilla in the zoo? Now you're asking somebody. आप जानना चाहते हैं कि zoo के अंदर जो है वो gorilla है, तो आप कहेंगे is there a gorilla in the zoo? Is there? Okay, now look at this. Is there a letter on my desk? Is there a letter on my desk? You won't see a letter because there's no letter, right? So is there a letter on my desk? Is there? I'm asking you, is there a letter on my desk? And you're going to go to my desk and see, oh, no, there isn't a letter on your desk. So is there a letter? Not there is. Now you're asking a question. So you should follow this, this is structure. This is this construction, right? Okay, look at the wall. Are there any pictures on the wall? Are there any pictures on the wall? You won't see any pictures because there aren't any, right? Are there any pictures? You're not gonna say there are any pictures on the wall. There are any pictures on the wall? No, not right like that. It's not a question. So सवाल को सवाल की तरह करना चाहिए. उसका जो construction है, जो उसका format है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. आप ये नहीं कहेंगे there are, बल्कि आप कहेंगे are there, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं. और आमतौर पे ये गलती करते हैं स्टूडेंट, सवालात करने में सबसे ज्यादा गलतियां सवालात करने में करते हैं. Are there any pictures on the wall? Another question, are there any beggars at the door? There aren't any, right? Are there any beggars at the door? So if you want to ask about just one beggar, we say, is there a beggar at the door? We won't say, is there any beggar? We say, is there a beggar at the door? Is there a beggar at the door? Instead of any beggars and a beggar. Now,
Before we move on, if you have any questions, Fauzia, Misbah, Noor, Safina. Sir, can we use Yep. Any- no before? Sir, if the question is, are there any beggars on the door? So we can we say the answer no, they aren't. So Yeah, why not? Why not? Yeah. No, there aren't. Yeah, we can. I'm about to come to that. This is what we're about to do. Short replies. Okay. Fuzzy, any questions? No, sir, clear. Okay, that I'm gonna mute your microphone and I'm gonna go back to my presentation. So short replies. Now, sometimes I've already taught you this, in different tenses, different sentences, we do this. So short replies are used. They are used a lot in spoken English. So somebody asks you a question, is there a cat in the house? And you say, yes, there is. This is a short reply. Yes, there is. आप कोई पूछ रहा है भाई, is there a cat in the house? आपने कहा, yes, there is. ये short reply है. अगर आप पूरा long reply देना चाहें, yes, there is a cat in the house. So yes, तो ये पूरा full reply है, ये long reply है. और बिल्कुल आप इस तरीके से भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन बोलते वक्त जो है, अब जब बातचीत कर रहे होते हैं तो लोग वो मालूमात, वो चीज दोबारा रिपीट करना पसंद नहीं करते हैं. लोग मुख्तसर बातचीत करना पसंद करते हैं, और आपको भी यही करना चाहिए कि लंबे लंबे जुमले बोल के खुद को परेशानी में ना मुब्तला किया करें. लोग, मैं यही बताता हूँ बार बार कि लोग जानबूझ के अपने लिए परेशानियां पैदा करते हैं. They try to use long sentences thinking that's going to have a positive impact. No, it's not. You may run into troubles. बहुत मुमकिन है आप लंबे लंबे जुमले बोलने के चक्कर में, लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप जो है वो गलती कर बैठे. तो बेहतर ये है कि छोटे जुमले, और वैसे सिर्फ यही नहीं कि गलती का एक उसमें इम्कान है, बल्कि दूसरी बात ये भी है कि आमतौर पर नेटिव स्पीकर्स या हम खुद भी, आप देखें, अगर आप अपनी उर्दू को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि हम खुद भी जो है बातचीत करते वक्त इस तरह नहीं करते. हम मुख्तसर जवाब देना पसंद करते हैं. किसी बात का लंबा चौड़ा जवाब देना हमें अच्छा नहीं लगता. ठीक है. सो इज देयर अ कैट इन द हाउस? कहेंगे yes, there is. ठीक है. Is there a dog in the park? No, there isn't. Is there a dog in the park? Do you see any? No dogs, right? So is there a dog in the park? No, there isn't. No, there isn't. It's going to be a contracted form if you're giving a short negative reply, so it has to be contracted. Keep that in mind. ये contraction होगी लाजमी. यानी is not नहीं बोलेंगे, no there is not नहीं बोलेंगे, no there isn't बोलेंगे, contraction को use करेंगे short reply के अंदर. ठीक है. Okay, look at this. Are there any stars in the sky? Do you see any stars in the sky? You won't see any because there's just, you just see the moon, right? So are there any stars in the sky? So you're going to say, no, there aren't. No, there aren't. And this is a short reply. This is how you give a short reply. No, there aren't. So if you want to say, let's say you want to say, there aren't any stars in the sky. That's also right, but it's not a short reply anymore. ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन अब ये short reply नहीं है, अब ये long reply हो गया. ठीक है, full reply है, long reply है, पूरा जुमला आप इस्तेमाल कर रहे हैं. क्योंकि पहले से सवाल में है, are there any stars in the sky? तो ये repeat करने की जरूरत क्या है? No, there aren't. और फिर वही आपने रिपीट कर दिया, aren't any stars in the sky. जो बंदा सवाल कर रहा है उसको पहले से मालूम है उसने क्या सवाल किया है, तो आपको सिर्फ शॉर्ट रिप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं. उसको जरूरी नहीं आप पूरा बोलें उसको. नो देयर आरंट एनी स्टार्स इन द स्काई, वो पहले बोल चुका है ये बात. ठीक है. सो आर देयर एनी बॉयज इन द पूल? नाउ लुक एट द पूल. या, आर देयर एनी बॉयज इन द पूल? नो देयर आरंट. राइट, नो देयर आरंट. आर देयर एनी बॉयज इन द पूल? No, there aren't. And that's all for today. Yes, if you have any questions, unmute your microphones, everybody. no, And sir. if you have any questions. No, sir, clear. सर Yes. सर अगर हम यूं कहें yes there is, तो हम इसको यूं कंट्रैक्शन कर सकते हैं there और इसकी yes there's? नहीं ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है. नो, आप जो है अगर आप सिर्फ देयर इज करें तो आप यस देयर्स नहीं बोलेंगे, यस देयर इज बोलेंगे. ठीक है. यस देयर इज, उसकी कंट्रैक्शन नहीं होगी. अफर्मेटिव अगर आप यूज कर रहे हैं, रिस्पॉन्स, किसी ने पूछा इज देयर अ काउ इन द फील्ड, तो आप कहेंगे यस देयर इज. यस देयर्स नहीं बोलेंगे, यस देयर्स नहीं बोलेंगे. यानी कि अगर पॉजिटिव है तो उसकी कंट्रैक्शन नहीं होगी. नेगेटिव की हो सकती है नॉट के साथ. ठीक है, लेकिन पॉजिटिव की कंट्रैक्शन नहीं होती.
पॉजिटिव की कंट्रैक्शन नहीं होती है, मत कीजिएगा कभी भी पॉजिटिव की कंट्रैक्शन से। यस देयर इज, मिसबा का सवाल बहुत अच्छा है, मिसबा आपने सवाल उठाया और ये प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए वैसे ये बात, इस चीज को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको एडिट कर लें और इसको डाल दें। सो यस देयर इज होगा, यस देयर्स नहीं होगा, यस देयर्स नहीं होगा, कभी भी नहीं होता इस तरीके से, ठीक है। उसके लिए लाजमी तौर पे कुछ चीज होनी चाहिए आगे कंट्रैक्शन के लिए, पॉजिटिव कंट्रैक्शंस के लिए। अगर मिसाल के तौर पे कहते हैं इज ही सिक, तो आप ये नहीं कह सकते यस ही इज, ये नहीं कहेंगे, आप कहेंगे यस ही इज। अगर हम कहते हैं ना इज ही सिक और उसका शॉर्ट रिप्लाई दें यस ही इज होता है, तो यस ही इज होगा, यस ही इज नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। सो एनी अदर क्वेश्चंस, मिसबा, फौजिया, नूर, सफीना, एनी क्वेश्चंस? Sir, I have a question, but not about today's topic. I Okay. solved the quiz of apostrophe S with nouns. Mm-hmm. So there was a question that James car. So I put only apostrophe, not with S. So it was wrong. Mm-hmm. But you told Fazia, that. do you have Fazia, do you have a a screenshot for me or Sir, something? I Because you see, I took need a to see picture what you of did. that, but I don't know how to share. I took a picture. I have a picture in my mobile phone, but I don't know how Yeah. to share it Okay. with You you. know, you need to email that, right? Send it. Okay. Email it. Okay. Yeah. Okay. That is the right way. So yeah, Sir, I do that. faced the same problem. I did the same, but yes, it was saying answer is not correct. Okay. So this is what you need to do. You need to send an email, right, to the Okay, sir. support team. Answer Okay. was Do that. Jamses. Sorry. सर इसका आंसर ये था कि जेम्स अपॉस्ट्रोफी और एस लगाना था। Both are possible, right? Both are possible. What I want you to do that just take a screenshot and email it. Okay. So okay, guys. So what we're gonna do is a quiz. Okay. एक छोटा सा क्विज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी ओरल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? क्या ख्याल है? छोटी सी ओरल प्रैक्टिस हो जाती है। Yes, sir. जब तक बोलने में नहीं होगी कोई चीज तो मजा नहीं आएगा। असल मकसद क्या है, किसी भी टॉपिक को करने का मकसद क्या है, जहन में रखें। जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी जहन में रखें। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन असल चीज क्या है, यानी कि बोलना। आपका मकसद क्या है? बोलना मकसद है ना। मालूमात सिर्फ हासिल करना तो मकसद नहीं है। मालूमात इसलिए हासिल की जाती है ताकि उससे फायदा उठाया जाए, ठीक है ना। असल मकसद तो मालूमात का ये है। आपने कोई किताब तो नहीं लिखी ना। क्या ख्याल है? तो मकसद क्या है? द पर्पस इज टू एक्चुअली यूज इट while speaking and while writing. That is the purpose. That is, and if that is not the purpose right now, make it your purpose, make it your goal. इसको पर्पस बनाइए, इसको गोल बनाइए कि भाई हमारा मकसद क्या होना चाहिए। जो भी हम सीख रहे हैं इस क्लास के अंदर, ग्रामर जो कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, या हम डायलॉग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारे बोलने में आ जाए, ठीक है। और खासतौर पे जैसे भी हम ये मौजू कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है वो इसको मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है। और हम इसकी बोलने की, जैसे आपको मालूम है क्लास में क्या करते हैं, जब कभी भी हम कोई टॉपिक जैसे करते हैं तो उसकी फिर मश्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बोलने की। तो सामने फौरी तौर पे जो ओरल प्रैक्टिस हम करते हैं क्लास में, उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से यानी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए क्लास में होने का फायदा ये होता है, अगर आप पैसिव लिसनर हैं तो अब जैसे इस वक्त फेसबुक पे बहुत से लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो वो फायदा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक क्लास में मौजूद ना हो किसी टीचर के साथ और फिर बोल रहे हो, मश्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और उसके बाद जो है गलतियां जो सामने आती हैं, तो उससे वो फायदा हासिल नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी जरूर जो है वो जो देख रहे हैं अपनी कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे, सही है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक पिक्चर बल्कि शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को नजर आ रही सबको पिक्चर? एवरीबॉडी? जी, Yes, Fauziya, sir. Misbah. Yes, sir. Okay. Now, one by one, you're going to tell me what you see in the picture, right? One by one. So, Fauziya, I want you to look at the picture carefully, and now I want you to tell me what you see using there is or there are. Just one thing. Okay? Okay, Fauziya. sir. There is a chair in the picture. Fauziya, look carefully, and look carefully. What you're saying is actually not entirely correct. Okay. Hmm. There are two chairs in the picture. Fauziya, you need to get your eyes tested, honestly speaking. Look again.
Okay, look Uh, again carefully. Yeah. uh, So uh, there are actually three. Three. See? Yes. Sir, where are the third one? Okay, one is by the desk, by Sir, the one is table. blue and That's the one is Near to table. brown. screen. Near to our You screen. see one over there. There are two on each side of the furnace. You see? Yes, sir. See? Two chair, and one is by the table. This table, the one in the center table. Do you see this? Uh, okay, sir. Okay, It's sir. right There there is a in front guitar of you. in the. Yeah. There is a guitar in the picture. Okay, I think this is- Fauzia just left the chair. Fauzia left the chair. छोड़ो, chair से क्यों बोल दी मैं? Okay, there's a guitar. Yeah, there's a guitar. That's right. Okay, so Misbah, what do you see There are in the three picture? tables on the picture. There are three tables In in the the picture. picture. In the picture, yeah, there are three tables in the picture. That's right. Okay, Noor, what do you see? There are two paintings on the wall. There are two paintings on the wall. Okay, that's right. Safina, what about you? What do you see? There is a piano in the room. There's a piano in the room. Very good. Fauzia, what else? Sir, there is a carpet on the floor. Yeah, that is not a carpet. Actually, that's a you can say a There rug, is a rug. maybe. Rug. There is Yeah, a rug. that's a rug. Yeah, there is a rug. Looks like a rug, but because it does Yeah. not cover the whole area, the whole floor. That's why. Misbah, yes. What else can you tell us? Sir, What do there you is see? a room. Yeah, There is a window in we have a lot Sir, of things. You see, there is a it's window still in there are a the lot of things. Yeah, there is a window. Okay, there's a window in the room. Okay, and Noor, what There about is you? a What lamp. else do There you is a see? lamp on the table. Yes, that is right. Left side. Okay. I, On yeah, left I side. see that. Yeah, that is right. Yeah. Okay, Safina. There is a clock on the furnace. Yeah, that is right. Okay. Fauzia. There is a table lamp on the table. There is a table lamp on the. That's already been mentioned. That's already been mentioned. For Noor just told us that. Okay. There is a Yes. curtain on the window. Okay, there's a curtain. Okay, that's right. And Misbah, what about you? Anything else? Do you see anything else? Sir, there is a mirror or a frame. Why would someone have just a frame? Why would someone have just a frame? That is a mirror. Yeah, that is a mirror. So Yes, how would you say? How would you say? mirror कैसे on कहेंगे? the नहीं, there is नहीं mirror on the नहीं. There is. there is a mirror हाँ, कहाँ पर है? on the wall. सर दीवार पर है ना, on the wall होगा ना. हाँ तो पूरा बोले ना, मतलब आपने there is mirror बस मुझे इतना सुनाई दिया ना, आगे नहीं सुनाई दिया. जी चलें. So whose turn is this? Noor. Yep. Yes, sir. There is a beautiful view outside the window. That's really nice. That's really nice. Okay, Safina. There are Let's two talk vases. about outside. Yeah. Okay. There are no there Safina. is- Yes, you're right. Yes. There are two No, Safina, vases you're on right. the table. Vases. Yeah, there are two vases. American accent. Right? Vases. Two There are vases. two vases Yeah. on the table. On the tables. because they are No, actually, there are not. There aren't two. There are three. If you look carefully, 1, 2. Yes. one on the furnace, the fireplace, one on the fireplace, one on the Okay, yes, sir. table There, that and is one on the left, side table. one in the center. There is a center table. Yes. You see, there's a table. There are three. Yeah, Yes, sir. Yes, sir. vases. Vases. There are three vases on the tables. You can say not on the tables. You can say there are three vases in the room.
That's better In the room. because one is on the Okay, there fireplace, are- one is on the center table. Yeah, so there are 3 vases in the room is better. Repeat So that, wait, please. in the room. Yes, vases. Vases, that's American pronunciation. Okay. So I told you before that we are close to American pronunciation, right? We are close to American pronunciation. So it's easier to, grasp it as compared to the British accent. So Fazia, There are some trees outside the window. okay, why don't you try counting them? Why don't you count them? I don't know. Actually, there are 4 or 5. There are 5 trees outside the window, I think, but no, 3 Eight. or 8. Eight. There are 8 trees. Yeah, outside the window. Okay, there's something else outside the window. So who can tell you, Misbah? Tell me something. There's something else outside the window. What that is? Yes, Can you sir. can you tell me, There is no Misbah? outside. Misbah. Yeah, what? There is no outside the window. Yeah, there's snow. There is a lot of No. snow outside. Yeah, that is The right. window. Okay. And Noor, anything else you would like to tell Yes, me sir. that you see in the Yes, sir. picture? There is a piano in the room. Already mentioned. It's been mentioned. Already been Sure. mentioned. There are 2 Yeah, it's glass. been mentioned. Okay. Wait a minute. Noor's turn. This is Noor's turn. Noor. Yeah. Noor ki bari hai bhai. Ji Noor. Sir, there are 2 colorful paintings on the wall. That's been mentioned too. Already been mentioned. ये भी बताया जा चुका है जी नूर और भी देखें और चीजें नजर आएंगी अगर इधर उधर नजरें दौड़ाएं you'll see something कुछ तो नजर आएगा Okay, let me see, sir. Sir, I can tell you. Sure. There's a No, flower. wait a There minute. is a sir, there is a Wait a minute, Safina. sculpture- Wait a minute, Safina. Okay. Safina, wait a minute. Let her do. Yeah, it's her turn. Yes, Noor. There is a flower vase on the table. There is a One what? bottle. Flower A vase. bottle? A bottle. flower vase. Yeah, yeah, that's been mentioned too. No problem. Safina is going to tell us something. Safina का मेरी बारी ना निकल जाए मुझे एक चीज मिल गई है जल्दी And से 2 बता दूं more. मैं. And 2 Sir, glasses. there is a okay. Yeah, yes, Safina. There is a sculpture that kind of Yeah, that is a sculpture, statue kind of thing. Yeah, that's Yeah, right. in On the the room. table, on the right. on the Yeah, in table. the room. That's right. Okay. Now that's it, guys. So we've done almost, I think, everything. Now, what I want you to do, I want you to ask each other questions. Is there, right? Okay. Is there or are there? And then you use is there a dash in the room or are there any dash in the room like this? Okay. And something that is there. I want you to ask about something that is there, that already exists, that you see, it's present. Is that clear? So, Yes, sir. okay, Fazia to Misbah. Something that is there. We're practicing affirmative responses. हम क्या practice कर रहे हैं? Affirmative responses की practice कर रहे हैं. Fazia Misbah से सवाल करेंगी. जी, Miss Fazia. Misbah, are there any chairs in the picture? Yes, there are. Full reply चाहिए मुझे. Noor, there is some disturbance. Please make sure that you're not moving much. Okay, Misbah. Yes, I there need are. a full reply. I need a full reply. Yes, there are 3 chairs in the room. Very good. Misbah to Noor. Is there any lamp in the room? Is there Yes. Is there a lamp Yes, in the there room? is a lamp in the room. Actually, if you see, you will find more than one. Noor. More than one. Sir, she's asking about a lamp. Yeah, but there are more. There's more. There's more. Yeah, You know, okay, there's okay. more than Yeah, one. yeah. There are 2 lamps in the room. Okay, Noor to Safina. Safina, is there a window in the room? Yes, there is a window in the room. Okay. Safina to Fazia. Yes, Safina to Fazia. Fozia, is there any guitar? Is there a guitar in the room? Yes, there is.
Complete response, Fawzia. Yes, We're not there is a practicing short guitar. replies. Yes, there is Yeah. a guitar in the room. Okay, Fawzia to Misbah. Yes. Is there any sculpture in the room or picture? Is there a? Is there a? sculpture? Okay. Is there Yeah. a sculpture in the picture? Yes, there is a sculpture in a room. In the room. Okay. Okay, on the table, in the room, in the picture. I mean, yeah, all right. So Misbah to Noor. Is there a glass in the table on the table? Yes, there are 2 glass on the table. 2 glass or 2 glasses? 2 glasses. Yes, sir. 2 Yeah. glasses on the table. Yeah, Noor to Safina. Safina, is there a window in the room? It's done. It's Yes, done. there is a- Something else. Okay, okay. It's Is done, there, are there paintings in the room? Any paintings? Now, any paintings? Yes, Because there it's a are question. 2. Okay. Are there any? Yeah. Are there any paintings in the room? Yes, there are 2 paintings on the wall or in the room. Yeah, in the room, on the wall. That's right. Okay. Now I want you, Noor, there's some this distortion or something, please. Sir, I don't I don't know what why that it is. happening. Yeah, but there is something, there is something like, I am sitting. yeah. I know you are, but I don't know what that is. I just can't describe it. I also Okay, so don't now know what size is happening. Yeah. I may I mute my phone? No, you don't. We're practicing. No, you don't. You Okay. don't. No, you don't. Okay. Right now, right now it's everything is okay. There's nothing wrong. So just stay still. Just like that. Okay. Okay. Statue. Okay. Okay, Fawzia. Fawzia to Yes. Misbah. Now, Fawzia, what I want you to do is that I want you to ask a question about something that is not there in the picture. Okay. Okay, sir. That doesn't Um, that is not there in the picture. Yes, Fawzia to Misbah. Okay, sir. Misbah, is there a bed in the picture? No, there is not a bed in the picture. Misbah, contraction. I told you to use the contracted form. Yes, Don't say sir. is not. Say isn't. No, there Repeat. isn't a bed in the room. Again, Misbah. Misbah again, please. No, there isn't a bed in the room. Okay, Misbah to Noor. No. Is there any cupboard in the room? Is there a? No, Is there a? अगर singular use कर रहे हैं any मत लगाएं उसके साथ आ लगाएं. अगर singular noun है तो आ लगाएं. Any ना लगाएं. Any को plural के साथ लगाइएगा. ठीक है? जी. no, Misbah, there again. isn't. No. Wait a minute. Noor, wait a Okay, minute. Let her okay. do it. Yeah. Okay, Okay. Misbah. Is there a cupboard in the room? No, there isn't a cupboard in the room. Yeah, this is how we should ask and respond. This is the right way. Okay, Misbah? Noor, that's really good. Yeah. Noor yeah. to Safina. Something that is not there. Safina, is there a dressing table in the room? No, there isn't a dressing table in the room. Safina to Fawzia. Jose, is there a cat in the room? No, there isn't a cat in the room. Very good. Fawzia to Misbah. Plural nouns. Now some plural nouns. I want you to use are there. Okay, Yeah. sir. Are there any books on the table? Very No, good. there Yeah, aren't Misbah. any books in the table. Not in the table, on the table. You can't have books in the table. Books are on the table. They're not in the table. Misbah, repeat your response. Fawzia, repeat your question. She's gonna respond to you again. Are there any books on the table? No, there aren't any book on the tables. Any books on the tables? मिसबा जल्दी के चक्कर में मिसबा ने गलतियां कर मिसबा फिर से जवाब देंगी मुझे जी. No, there are. Sorry. No, Yeah. there aren't any books on the table. अब सही है. ठीक है. असल मकसद ही यही है. प्रैक्टिस करने का मकसद क्या है? ठीक है. मकसद आपको मालूम है क्लास में हमारी क्लासेस में क्या होता है आपको मालूम है वो ये कि हर चीज की प्रैक्टिस होती है ताकि जो गलतियां हैं सामने आए
उसका मकसद ये है, क्योंकि लोग बोलते वक्त ज्यादा गलतियां करते हैं, लिखते वक्त गलतियां नहीं करते ज्यादा। सबका मसला यही है ना? क्या ख्याल है आप लोगों का? यही है ना मसला? Yes, ज्यादा मसला क्या है? yes, बोलते वक्त ज्यादा गलतियां होती हैं, लिखते वक्त गलतियां नहीं होती, क्योंकि लिखना आसान है। बोलते वक्त तो फौरी फौरी बोलना होता है, exactly. लिखने में तो बंदा मिटा लेता है, डिलीट कर देता है, उसको यानी रेक्टिफाई कर सकता है, एडिट कर सकता है। भाई बोलने को एडिट कैसे करेंगे फौरी फौरी? यानी कि वो आप दोबारा रिपीट ही करना पड़ेगा ना आपको, उसको तो मिटा नहीं सकते। तो कहने का मकसद ये है कि स्पीकिंग इज मोर डिफिकल्ट, as compared to writing. So this is what we do. Everything that we learn, that everything, any grammar topic, whatever you learn in grammar, we practice here. हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं क्लास में, ताकि वो आपके बोलने में आए और गलतियां सामने निकल के आए। हर स्टूडेंट की गलतियां अलग होती हैं, ठीक है? मिसबा सवाल करेंगी नूर से। Are there Are there any से bottles? Are there Hmm. any bottles in the room? Repeat your question, मिसबा। Are there any bottles in the room? Yes, इसको थोड़ा सा वो करें, इन एक मिनट, नो नो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम सॉरी। इसको थोड़ा सा इसकी कोई स्पेसिफिक करें, इसको थोड़े से लोकेशन को, ये बहुत बहुत वेग है। आर देयर एनी बॉटल्स इन द रूम? आप कुछ ऑन द डेस्क, ऑन द चेयर, ऑन द फर्नेस, ऑन, इस तरह किसी जगह का नाम लें, खास जगह का, ताकि हमें रूम के अंदर थोड़ा सा हमें ज्यादा बेहतर लगे। अजीब सा लग रहा है कमरे में कोई बोतल पड़ी, आई मीन इट साउंड्स रियली स्ट्रेंज। कोई आप टेबल बोल दें, पियानो बोल दें, विंडो बोल दें, फर्नेस बोल दें, फायरप्लेस जो है जी, किसी जगह का इंतखाब करें और वहां पे बोतल रख दें जी, और फिर सवाल करें। Are there जो any चीज यहाँ पे bottles? मौजूद नहीं है, जो Yes, चीज sir. नहीं है, मैंने कहा था। Sir, जी, तो टेबल पे बोल सकते हैं ना, Are there any bottles on the table? वो तो देयर है। इज वन एक्चुअली, एक तो Yeah. है ना हमारे पास। आप देखें जो सेंटर में रखी हुई टेबल, उस पे एक बोतल रखी है वहां पे। तो बोतल ना करें, कुछ और चीज करें, लायन कर दें, मंकी कर दें, हाथी कर दें, जहाज कर दें, कुछ भी कर दें, जो चीज नहीं है नजर आ रही। बिल्कुल, यस मिसबा, हरी आप। Are there a horror? Oh, sorry, sir. कोई मसला नहीं, परेशान नहीं हो, फिर से करें जी। क्या है? आर देयर मंकीज कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ, मंकीज कर लें, ठीक है? करें Sir, जी। are there monkeys एनी in your? एनी मंकीज, आर देयर एनी मंकीज इन द रूम, इस तरह करें चलें। आर देयर एनी मंकीज इन द रूम, रिपीट करें मेरे साथ। Are there any monkeys in the room? यस नूर। No, no, there aren't monkeys in the room. There aren't any एनी monkeys मंकीज, in the room. एनी, Yeah. क्योंकि एक भी नहीं है ना, जीरो Yes, जीरो sir. एग्जिस्टेंस हो गई, तो Yes, एनी sir. मंकीज। No, ओके, there नूर टू aren't. सफीना। Hmm. Safina, Safina, are there any plants in the room? No, there aren't any plant in the room. Plants, yeah, plural. Plants. Safina to Fawzia. Yeah, Safina to Fawzia. Fozia, are there any sofa set in the room? Sofas. Uh, Yeah, okay, sofa set, Sofas. sofa. Yeah, no, sofas or there sofa set. are, Okay, that's also right. Yeah, Fawzia. no, there aren't any sofas in the room. Okay, now singular plural mix. Is there, are there, कोई सा भी मर्जी चाहे कर लें, ठीक है? Fawzia, Misbah, one more round. Yeah, hurry up. Is there a boy on the chair? Very good. There is no boy on the chair. Yeah. There's no boy, or there isn't a boy on the chair, or there is no boy on the chair. बिल्कुल सही है। Misbah, next one. Misbah to Noor. There is a dining table in the room. आप सवाल कर रही हैं, जवाब दे रही हैं। Sir, question Misbah. कर रही हूँ. तो there is कैसे हो सकता है? Is there होगा ना? Oh yes, sir. Is there जी। a dining table in the room? Yes. Very good. Yes, there is a dining table in the room. Very good. Yes. Misbah to Noor. Oh, sorry. Noor to Safina. I'm really sorry. Noor to Safina. Okay, sir. Safina, are there plates on the dining table? What? No, there is No, no, no no, 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 dining no, no. table. Sorry, Safina. No, 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 no. Safina, wait a minute. There is one. You see, I Okay, mean, sir. there is. You can say it's a small one, but there is. I mean, you dine. You know, you sit there and then have lunch or dinner, whatever, drink something. Noor, you repeat your question. Are there any plates on the dining table? Okay. No, there aren't any plates on the dining table. Okay.
Okay, Safina to Fawzia. Are there any mm, what I say? Are there any? कुछ भी ले आए सफीना, कुछ भी, कितने गाड़ी ले आए, ट्रक ले आए, पानी का जहाज ले आए, जो मर्जी चाहे, कोई है ही नहीं यहाँ पे। एंजॉय करें इसको, प्रैक्टिस को तो एंजॉय करना चाहिए, Are ऑनेस्टली। there any? Yes. हाँ। Is there any car in the room? Is there a car? नहीं, any नहीं लगाए, मैंने कहा सिंगुलर के साथ any मत लगाए। Is there a car yeah, कर yeah. दें। Is there a car in the room? No. No, there isn't a car Yeah, in the Fawzia. room. Very good. There isn't a car in the room. Okay. क्या ख्याल है, कुछ बेहतर हुआ, कुछ समझ में आ रहा है किस Yes, तरीके से sir. there is there हम यूज कर रहे हैं और किस तरीके Yes, से आपने इसको यूज करना है, कुछ Yes, sir. बात जहन में आ रही, कुछ समझ में आ रही है। Yes, sir. We thought that. और करते हैं। Yes, sir. We thought that is really easy, but when we are practicing, we realize that there is not too much easy when we Exactly. use it. When we start Yeah, that's using right, these yeah. things in our sentences. Yes, that is right. That is true. When you actually see, knowing something is easy, doing something is difficult. What do you say? Yes. Knowing Yes, sir. something Yes, is sir. easy, Yes. doing something Yes, is sir. difficult. मालूमात तो किसी हर एक को है, सबको पता होता है ना, कितना आसान सा लगता है, ये बहुत आसान है। अभी लेकिन कल हम इसमें और जब थोड़ा सा हम इसको कल और करेंगे, तो फिर आप कल देखेंगे यार ये भी होता है, तो जहन में कम आ रहा है, कभी बात आई नहीं थी। कल हम इसको और देखेंगे, थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, थोड़ा सा अंदर और मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ और तरीके से इसको इस्तेमाल कर इसका सीखेंगे। बहुत ही अहम टॉपिक है, सही है। सो वी गोना प्रैक्टिस मोर, जैसा कि आपको मालूम है, हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। सो देयर यू सी देयर इज अ प्लान, राइट, ऑफ अ हाउस. Yes. So everybody is going to tell me what they see, right, in the plan. So in the house, we're going to consider it a house, right? So Yes, sir. Fawzia, yes, Fawzia, tell me, Uh, what do you see? Just there one are- thing. There are three cars in the house. There are 3 cars in the garage. Yeah, or in the house, or yeah, you can say like in the house. I mean, that's a garage, right? I mean, place where you Yes. park your car. So that is known as it's a plan. So you're gonna say there's a. I mean, because we're talking about this house, so we can say a house or a garage or like this. It's better like this. I mean, okay. Yes. I mean, we're going to talk about specific things like bathroom, bedroom, whatever, garage, living area, family area, kitchen, like this. Okay, so like this, not just the whole house, but a Okay. specific a specific place. Yes. Excuse me, So sir. Fawzia, repeat your yes, Noor. Sir, what is are these two portions linen? Linen or linen? It's I really don't know. I honestly don't know about that. I'm gonna have to like Okay. dig in about it. Honestly, I don't know. Why don't you? Why? Somebody please search online. Just Google it Okay. right now. Thank See what this. Maybe it's like for like clothes or something. I don't know. I'm not sure. Honestly, I have no idea about this. Okay, sir. We don't usually have it's an American bedroom, right? American house plan, so no idea what this. Okay, so garage. Okay, so Oh. Fawzia, I want you to repeat what you just said. Okay. Okay, Okay, sir. There are 3 cars in the garage. Garage. garage, not gay. Garage. G, g, not Okay. just garage. Garage Oh. is garage. Raj is like the Garage. stress is on Raj. Garage. Okay. There are 3 cars in the garage. Better. Okay. Okay. Yeah. The next one, Misbah. There are 2 bathrooms in the linen. Sir, in the room In होगा the ना? in the no, there are 2 bathrooms in the house. क्योंकि आप पूरा house को consider करेंगे ना, एक जगह पे तो नहीं है ना, दोनों जो bathrooms बने हुए हैं, bathrooms, look at them. One is, you see, there are 2 bathrooms in the in the house. Okay. Noor. There are 3 bedrooms in the house. Yeah. Very good. Yeah, that's right. Yeah, Safina. There is a dining table in the room or in the house. In the house, yeah, okay, in the dining area, you can say, yeah, there is a dining table Yeah. in the dining area. It's a dining Yes. area, right? In the dining area.
Yes, There Fazia. is a dining else? table in the dining room. Yeah, yes, Safina. Okay, Fazia. There is a porch in the house. Porch. Yeah, that's right. That's right. Yeah. And Misbah, There is a kitchen in the house. there's a kitchen. Yeah, that's right. And what else do you see? Okay. Now let's go deeper. There's something else that you see. Yes. Noor. There is a family sitting area in this house. In the house. Okay. Better. Yeah. And Safina. There is a laundry area in the home, in this house. In the house. Yeah. In this In the house. Yeah. house. Okay. Fazia. There is a master bathroom in the house. Yeah. There's a master bathroom. Okay. Okay. Misbah. There is a living room in the house. There's a living room. Okay. And Noor. There is an entry portion in this house. There's a what? Okay, no, that is just the entry. No, that's not the entry portion. It's just the entry to the house. So it's There not a is portion or something. It's okay. just it is just so you know that this is where you enter the house. Yeah. Yeah. So something else. Okay. There Yeah. is entry in the Noor. house. No. हर घर में नूर एंट्री तो होती है. एंट्री को हम नहीं फोकस करेंगे. और कुछ देखें. अच्छा ठीक. Okay. आपको टेबल के आगे देखें. टेबल के इर्द गिर्द कितनी चेयर्स रखी हैं वो बता दें. चलें जो डाइनिंग टेबल है उसके इर्द गिर्द कितनी चेयर्स रखी हैं वो बता दें. There are 6 tables. Huh? There are 6 Tables? chairs. There are 6 chairs Around the in the table. room. Around the table. नहीं in the room नहीं around the table. हम इस थोड़ा स्पेसिफिक करेंगे ना. थोड़ा सा उसको ऐसे in the room सही है लेकिन ये है कहाँ पे? वो किसके इर्द गिर्द है? डाइनिंग okay, टेबल sir. के तंग. Now I am repeating. There are 6 chairs around the table. Yeah, that's right. Okay, so I think that's enough. What we're going to do is I'm going to give you a quiz now. Okay. Is the concept clear? Is it Yes, any sir. better than before? पहले Yes, से बेहतर sir. है. कुछ समझ में आया है कि हमने क्या करना है. उर्दू में हम इस तरह नहीं बोलते. उर्दू में हम जिस तरह बोलते हैं कि भाई हम उर्दू में तरीका दूसरा है. मैं उर्दू इस्तेमाल नहीं करता हूं. आपको मालूम है क्लासेस में हम उर्दू की बुनियाद पे नहीं सीखते. कोई भी चीज हम उर्दू की बुनियाद पे नहीं सीख रहे. हाँ, उर्दू में कभी ऐसी जुमला बोलने में कोई आ जाए तो एक अलग बात है. लेकिन उर्दू की बुनियाद बना के ले लेना उर्दू को. ये देखें ये जुमला उर्दू का ऐसा है, ये इस पे खत्म होगा तो फिर ये होगा इंग्लिश में. ये ऐसा तो नहीं सिखाते ना. सही है ना. ऐसा नहीं करते हम लोग यहाँ पे. हम ठीक है कभी कोई जुमला बता देते हैं उर्दू में, लेकिन ये कि उर्दू की बुनियाद पे कोई चीज नहीं सिखाई जा रही है आपको. तो ध्यान में रखिएगा कि उर्दू जब देखें अगर आप उर्दू की बुनियाद पे सीखेंगे तो फिर अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं सिखाऊं तो आपको उर्दू की बुनियाद पे, ठीक है, और कहूं आपसे इंग्लिश में. सोचो कितनी फजूल बात है ना. आई मीन दिस इज रियली स्टूपिड ऑनेस्टली स्पीकिंग. कितनी फजूल बात है. यानी आपको कोई शख्स सिखा रहा है उर्दू की बुनियाद पे, देखो ता है, ती है, अलिफ छोटी है, बड़ी है, और कह रहा है कि सोचो इंग्लिश में. आप कहेंगे कितनी अजीब सी बात है ये. हम सीख पूरी उर्दू की बुनियाद पे रहे हो, कह रहे हैं कि इंग्लिश में सोचो. सो ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट. You know, if you don't need to know the translation, you shouldn't seek it. You just rely. If you understand something, that's enough. Why to seek Urdu translation? Why? You shouldn't do that. If you look for Urdu translations, you are making sure that you never think in English. अगर आप उर्दू ट्रांसलेशंस ढूंढ रहे हैं, हर चीज की उर्दू में करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ आपको इंग्लिश में समझ में आ भी गया फिर भी उसको उर्दू में कर रहे हैं, तो ध्यान में रखें आप इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि आप इंग्लिश में कभी ना सोच सकें. आप हमेशा उर्दू के अंदर ही फंसे रहेंगे, उर्दू में ही सोचेंगे, फिर उसको तर्जुमा करेंगे, और फिर फंस जाएंगे तो कहेंगे सर उर्दू में तो ये हो रहा है. तो मैं कहूंगा मैंने तो कभी नहीं सिखाया, मैं क्या कह सकता हूँ. तो आपका मसला है. I mean, what can I say? So I'm about to give you a quiz. एक quiz करेंगे क्लास में, जैसे क्लास में quiz होता है, ठीक है. So just give me a second, please. Okay. So the quiz is. Okay, so the link is in the chat, right?
सो जो इस वक्त फेसबुक पे हमें देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए क्लास में होना जरूरी है ताकि आप क्विज कर सकें और मुख्तलिफ प्रैक्टिस जैसे आपने देखी हम इस वक्त कर रहे थे। तो ये बहुत जरूरी है। सिर्फ यूट्यूब पे ऐसी हजारों वीडियोस मौजूद है, अगर आप जैसे देख रहे हैं इसको, इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, लेकिन वीडियोस के मौजूद होने से आपकी इंग्लिश में फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप कहीं पे मौजूद नहीं है, क्लास में किसी टीचर के साथ मौजूद नहीं है, स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे क्लासमेट्स के साथ। तो इसलिए आपको जो है वो आपकी इंग्लिश इंप्रूव इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। तो हम समझते हैं कि हमें कोई चीज आ गई सिर्फ वीडियो देखने से, वो हमें जहन में आ गई लेकिन जबान पे नहीं आई। जबान पे लाने के लिए और इस बात पे यकीन करने के लिए जो जबान पे आ रहा है सही आ रहा है और टीचर आपको बताएंगे, तब तक आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट, वो जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए जो आप चाहते हैं वो नजर नहीं आएगी। सो लाइव सेशन को हम यहीं पे खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो स्टूडेंट्स क्लास में हैं मौजूद हो प्लीज अपना क्विज मुकम्मल करें।